Statistics as a process. Step 1, collection of data. Step 2, organization. फिर आएगा presentation. तो collection done. अभी हम बात करेंगे organization of data की. अब ध्यान से देखना, इसमें बहुत सारी हम terms सीखेंगे जो हमें न्यूमेरिकल्स करने में भी हेल्प करेगी. तो प्लीज मीनिंग समझना हर एक टर्म का. इसमें आपकी वोकैबुलरी बिल्डअप होगी आगे पूरा स्टैटिस्टिक्स हैंडल करने के लिए. तो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे अकाउंटेंसी में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स था ना, उस टाइप का है कि आपको हेल्प करेगा कि अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एरे क्या होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती हैं. हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं इसमें बहुत सारे आगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और कोरिलेशन, डिस्पर्जन कोरिलेशन. बट यहां पे हम टर्म्स पहली बार सुनेंगे, तो प्लीज टर्म्स क्लियर होनी जरूरी. In the previous chapter, we learned how to collect the data through primary or secondary sources. The collected data is complex and unorganized mass of figures. तो अभी तो सिर्फ डेटा कलेक्ट हुआ था, उसको जब तक ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे वो डेटा यूजेबल नहीं होगा, वो डेटा यूजेबल नहीं होगा, which is very difficult to analyze and interpret. Raw data को analyze करना बहुत difficult होता है. Therefore, in order to make the data capable of analyzing, these are classified and tabulated. The collected data is classified into classes and subclasses according to some characteristics. The process of classifying the data into classes and subclasses is known as classification. The process of tabulation, it will be discussed in the next chapter, is to present the classified data in a systematic tabular form. That will be a part of presentation. Tabular presentation, diagrammatic presentation, graphical presentation. Classification के बाद होगा. What do you mean by classification? Classification is the process of arranging the data into sequences and groups according to their common characteristics, or separating them into different but related parts. Meaning of classification. Under classification, on the basis of chosen characteristics, the similarity and dissimilarity in the various items are noted, and items exhibiting similarity are grouped together. तो जितना भी डेटा है उसको क्लासिफाई, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस at one place. Through classification, we try to strike a note of homogeneity in the heterogeneous elements of the collected information. अब जैसे मैंने सारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, सबके उसमें हाइट आ रही है, एज आ रही है, वेट आ रहा है और स्ट्रीम्स आ रही हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस. तो अब क्या है कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ कि ओके वेट, तो एक डेटा होगा ना, अच्छा वेट का सारा एक तरफ कर देते हैं कि 40 to 50 कितने स्टूडेंट्स, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. तो अगर कंपेयर करें तो होमोजेनिटी, एक चीज पे हम हाइट को वेट से कंपेयर नहीं कर सकते. एक किसी के हिस्ट्री के मार्क्स को हम उनके अकाउंट्स के मार्क्स से कंपेयर नहीं कर सकते, किसी के इकोनॉमिक्स मार्क्स से हम उसको मैथ से कंपेयर नहीं कर सकते. तो होमोजेनिटी का मतलब होता है कि अगर आपको कंपैरिजन करना है तो डेटा सेम होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक सेम होना चाहिए, होमोजेनिटी, होमोजीनियस होना चाहिए इन द हेट्रोजेनस एलिमेंट्स. अब मेरे पास तो स्टूडेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन थी, तो फिर उसको अलग किया ना कि वेट्स अगर कंपेयर करना है तो अलग, हाइट अलग, सब कुछ अलग. तो होमोजेनिटी इन द हेट्रोजेनस एलिमेंट्स. तो कंपैरिजन के लिए data must be homogeneous. Classification of data serves the following purpose. It condenses the raw data into a form suitable for statistical analysis. It removes complexities and highlights the features of the data. It facilitates comparisons and in drawing inferences, conclusions from the data. It provides information about mutual relationships among elements of a data set.
It helps in statistical analysis by separating elements of the data into homogeneous groups and hence brings out points of similarity and dissimilarity. So what purpose are served by classification? ये important है. Objects of classification. Similar point ही है, different words में same बात होने वाली है. Number 1, to simplify and condense the mass of data. In classification, the aim is to eliminate unnecessary details and makes the huge mass of complex data in simple, condensed, logical, and comprehensible form. It helps in highlighting the significant features of the data. For example, the huge and fragmented data collected during a population census has to be classified according to sex, marital status, education, occupation, etc. to ascertain the structure and nature of the population. जब तक आप data classify नहीं करेंगे, you will not be able to draw inferences from the data. You won't be able to draw conclusions. You won't be able to comment or say anything about the data unless it is classified properly. So number 1, to simplify and condense the mass of data, the huge data. Second, to explain similarity and dissimilarity of data. Common characteristics क्या हैं, differences क्या हैं. Classification facilitates the grouping of data according to certain similarities, dissimilarities. This enables the investigators to grasp them easily. Facts like educated and uneducated, married and unmarried, employed, unemployed, they are kept in separate classes. To facilitate comparisons, classification enables us to make meaningful comparisons, draw inferences, and locate facts. To study relationships. What is the relationship between the various elements? Classification helps in finding out cause and effect relationship. Cause and effect relationship जैसे price और quantity का data है. Price जब इतना था तो quantity इतनी थी demanded. Price बढ़ा तो quantity कम हो गई. Cause and effect relationship. वो भी तो statistics है कि जब इस चीज के prices इतने होते हैं तो इसकी demand इतनी है. तो we are able to study relationships because of statistics. To prepare the data for tabulation. Only classified data can be presented in a tabular form. Classification thus provides a basis for tabulation. Classification provides basis. So sequence है ना. Collection provides basis for classification. Classification और organization एक ही बात है. Classification provides basis for tabulation. Tabulation will further provide basis for analyzing the data. Central tendencies जो mean, median, mode calculate करेंगे वो उसके basis पे ही होगा. तो ध्यान से देखना, आगे चलेंगे. Objects of classification में last point, to present a mental picture. The process of classification enables one to form a mental picture of objects and summarize data can be easily remembered. Mental picture मतलब visualize करने में help करता है. So objects of classification, purpose of classification, meaning of classification.